perquisite. Let me ask you, what do you mean by perquisite? Perquisite is what? It is benefit given to employee, assessee or loss of assessee. Answer. Benefit. It is benefit given to an assessee. Mr. X is residing in a flat in Akudi. He is working as manager, general manager of Bajaj Auto Limited, and company has given him flat free of cost for staying purpose. What is it? It is benefit. It is what? Non-monetary facility provided by an employer to the employee. Your job as tax professionals is what? To convert non-monetary benefit into monetary terms. Section 17(2) specifically talks about unfurnished rent-free accommodation or accommodation at a concessional rate. Is that clear? हमारा काम क्या है कि फ्री फ्लैट वो यूज कर रहा है तो उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, बराबर? If the company would not have given him flat free of cost, then he would have paid from his own pocket as a rent. Is that clear? So we have to convert his benefit into monetary terms. We have to make him or her taxable. ठीक है भाई, फ्री में फ्लैट यूज कर रहे हो, आपको बेनिफिट मिल रहा है. ये फ्लैट आपने रेंट पे लिया होता तो आपको 25,000 भाड़ा भरना पड़ता. अब आप भाड़ा नहीं भर रहे हो, अब टैक्स भरो. We will calculate your non-monetary benefit into monetary terms. Table is given. There are two parts basically, two types of employees. First is central or state government employees, and category B is private sector employees. Okay. Central and state government employees case, if it is given, then you have to do one thing. License fees decided by the government for that particular accommodation, license fees plus whatever is the cost of furniture, 10% of cost of furniture or rent paid for furniture you have to add in category A. This is category B. For the purpose of your examinations, you have to focus category B, private sector employees. His benefit depends upon the city in which he is residing. If the population of the city is above 25 lakhs, then his benefit will be 15% of salary. When accommodation is owned by the employer, कंपनी का खुद का फ्लैट है और उसको फ्री दिया है, then it is 15% of salary you have to calculate and add into his taxable income. Clear? If accommodation is taken on lease or higher charges basis by the company or employer, then actual higher charges or lease rent paid for that flat by the company or employer or 15% of salary, whichever is less, that will be the perquisite valuation. If the city's population is more than 10 lakhs but less than 25 lakhs, then 10% of salary will be the benefit perquisite for that employee. And in second case, same calculation will be there, 15% of salary. Here it will not be 10% in column 3. If population of the city in which accommodation is provided is less than 10 lakhs, in that case, 7.5% of salary is the perquisite valuation benefit of assessing. And third column is same, 15% of salary or actual higher charges paid, whichever is less. Clear? And lastly, if accommodation is provided in a hotel, then if hotel is owned by the company, अगर बजाज ऑटो का खुद का होटल है, वहाँ पे मैनेजर is staying, then no perquisite will be calculated. But if hotel charges are paid by the company, in that case, 24% of salary is the perquisite valuation for that particular employee. This is a table for private sector employee. So I hope it is understood. But this is for rent-free, unfurnished accommodation. कभी-कभी क्या होता है, कंपनी फ्लैट के साथ या बंगलों के साथ, एकोमोडेशन के साथ फर्नीचर भी देता है.
अगर हाई लेवल का एम्प्लॉय है, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर or any key managerial personnel, in that case furniture is also provided. Then what you have to do, how you will calculate? See here, furnished accommodation calculation. Step number 1, compute unfurnished as per this table. Clear? Step 2, and rent paid for furniture or higher charges paid for furniture or 10% of cost of furniture if furniture is taken on rental basis. चलो होप इट इज अंडरस्टूड. वो ऐड करना है आपको. लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय ने थोड़ा बहुत पे किया है अपने पॉकेट से तो वो लेस हो जाएगा. क्लियर? वो क्या बोलेगा, मैं भी दे रहा हूँ, कंपनी फर्नीचर का 20,000 पे करे, 5,000 में पे कर रहा हूँ, तो जितना एम्प्लॉय बेयर कर रहा है अपने पॉकेट से दैट विल बी रिड्यूस्ड. एंड स्टेप 4 विल बी actual perquisite valuation for furnished accommodation. This way you have to compute furnished accommodation. Now very important, टेबल तो आप याद कर लोगे. सबसे important अगर कुछ चीज है तो what is the meaning of salary? In yesterday's lecture we have seen the meaning of salary for house rent allowance. What was the meaning of salary? Salary was as described in Gestener Duplicators Limited's case, basic salary plus dearness allowance computable in retirement benefits, and third is commission received by an employee as a percentage on turnover like marketing incentives. ये तीन चीजें सिर्फ सैलरी में आती है. सेक्शन 10, 13 है HRA, 10, 12 प्रोविडेंट फंड, इनके लिए जो कैलकुलेशन होता है तो वो गेस्टेनर डुप्लीकेटर का होगा. यहाँ पे इन केस ऑफ 72 perquisite valuation, entirely different definition of salary is given. The test of your knowledge as a student of income tax lies in correctly reminding, knowing these provisions. जब आपको 15% of salary लेना है, 10%, 7.5% लेना है तो with salary is equal to basic salary plus dearness allowance computable in retirement benefits, CRB means. If DA is given as percentage, तो full DA you have to take here. Pay attention, focus. Basic plus DA plus bonus. If bonus is received by an employee, entire bonus will be added here. Plus any type of fees paid to the employee over and above salary. Then commission, any type of commission. मैंने any लिखा है. Means either percentage of turnover हो या only commission हो. Then also it will be added. Plus all taxable allowances. ये क्या है taxable allowances? जैसे हाउस रेंट अलाउंस आपने कैलकुलेट किया, इनर कॉलम में आपने लिखा 50,000 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, 13 में 45,000. आउटर कॉलम में कितना आएगा? 50,000 माइनस 45,000. आउटर कॉलम इज 5,000. तो टैक्सेबल अलाउंस कितना आया? हाउस रेंट अलाउंस 5,000. तो वो यहाँ पे ऐड करना है. ऐसे जो भी अलाउंसेस है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, एनी काइंड ऑफ अलाउंस इन आउटर कॉलम आफ्टर प्रोवाइडिंग एग्जम्पशंस, दैट अमाउंट यू हैव टू टेक हियर. इसका सीधा मतलब क्या है मालूम है? द क्वेश्चन इन विच रेंट फ्री एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, you have to calculate this working note at the end of the problem. पहले पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, टैक्सेबल अलाउंसेस बाहर लेने हैं और लास्ट में लिखना है फर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 जो भी है, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, ये लास्ट में करना है. बिकॉज यू हैव टू टेक ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस हियर. और प्रॉब्लम वो दूसरे तीसरे नंबर पे देंगे ऑथर, बरोबर? तीसरे नंबर दूसरे पे भी दिया तो भी आपको उसको लास्ट में कैलकुलेट करना है, उसको स्टार मार्क करके रखो कि इसको एंड में कैलकुलेट करना है. बिकॉज यू नीड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पेमेंट्स ओवर एंड अबव सैलरी. इफ कंपनी हैज पेड हिम एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन फॉर एनी वर्क, इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोफेसर, I get extra remuneration for paper assessment. Is that clear? अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के, तो एज एन assessor of आंसर शीट्स
I get 12 rupees per paper remuneration. If I will check 100 papers, I will get 1,200. So that is my monetary payment over and above salary. That also required to be added here. Leave encashment मिला, leave salary का payment मिल गया. That is also monetary payment. That will be added here. So after calculating proper figure of salary, then apply 15%, 10% or 7.5%. जो भी आपको required है as per this table. So after computing proper definition under section 72, then you shall apply proper percentage and get an answer. If accommodation is at concessional rent, concessional means what? कि फ्लैट का भाड़ा कंपनी भर रही 30,000, कंपनी भर रही 30,000, एक्चुअल रेंट इज 35,000, तो 5,000 इसकी सैलरी से कट हो रहा है, तो वो बोलेगा इधर लेस करो, मेरा 5,000 तो जा रहा है, 5,000 into 12 months 60,000 मैंने पे किया है, तो वो लेस हो जाएगा. That is accommodation provided at concessional rent, that is third type. So this way you want to calculate working note. Friends, I told you, while appearing for examination for the paper of income tax or direct taxes, you have to mention all these provisions in working note. ये टेबल जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, you are expected to write in examination in working note with same, and then you have to show calculations, salary का calculation. Your presentation should be very neat and clean in examinations. इतना याद रखो. पेपर चेकर्स को प्रेशर होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता है देखने को हर एक चीज, तो थोड़ा नीट प्रेजेंटेशन अगर है तो इट विल गिव यू फुल मार्क्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रॉपर वर्किंग नोट यू हैव टू गिव एंड फाइनल आंसर में जाके बोल देना वर्किंग नोट नंबर 3 आंसर जो भी आपका वैल्यू आया दिस. सो इट विल टेक टाइम व्हाइल सॉल्विंग इनकम फ्रॉम सैलरी. एग्जाम में आपको वो लगेगा कि 1 घंटे में सॉल्व होगा क्या ये प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आपको, उसका थोड़ा स्पीड से कैलकुलेशंस करना है. I hope you have prepared the chart which I had given you in assignment. Okay, so prepare it, remind it properly, and then it will provide you proper results. Now if any questions are there, you can ask me. Any questions, any doubts? That's all. Thank you.